तो आज बेसिकली विल स्टार्ट विद द टॉपिक की कैपेसिटेंस। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर कैपेसिटेंस के अंदर देयर इज एयर तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बट जरूरी नहीं है कैपेसिटेंस के बीच में हमेशा एयर, यू कैन हैव सम अदर मीडियम आल्सो। नॉर्मली हम डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या आता, substances which are generally insulators it starts conducting when electric field is applied। तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं हमारे पास अगर कोई मीडियम है तो। First we say that polar molecules को हम लेते हैं substances in which the electronegativity of the two atoms is not coinciding or they have some natural dipole moment of their own। फिजिक्स की टर्म्स में हम कह सकते हैं polar molecules are substances in which the center of gravity or center of mass of positive and negative charge do not coincide। So we can say they have their own natural dipole moment. They have their own dipole moment. Center of mass of positive and negative charge do not coincide। And electronegativity of atoms forming them is different। एक की electronegativity ज्यादा है कि कम है। Like if you have an example, we can say NaCl। अगर हम NaCl को लें तो we say center of gravity of positive ion lies near sodium ion and negative near the chloride ion, and we draw like this। You have a dipole। Dipole moment always being from negative to positive। क्या इसकी dipole moment होगी? What happens when these substances are placed in external electric field? अब हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर डाइपोल्स। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। You have a dipole like this, say positive charge and negative, and you place them in external electric field। Positive charge experiences force in the direction of field and negative experiences force in direction opposite to the field। Equal and opposite forces are there। Net force on the dipole will be zero, but because of this torque, equal and opposite forces and this constitutes a couple and torque X। Due to this torque, this dipole tries to align itself। इस पे torque X करेगी तो ये rotate करेगा and it tries to align in the direction of field। So we say when placed in external field, placed in external electric field, positive charge experiences force in direction of field, or you can say positive and negative charge experience force which is equal and opposite। That means net force on the molecule is zero। एक force इधर है कि एक opposite। Net force तो zero है, but there can be two cases।
अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है दोनों फोर्सेस का तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगी अगर ये सेम ही लाइन में एक्ट करे. लाइक मेरे पास एक बॉडी है उसको मैं इधर से पुल कर रहा हूँ इधर से भी से नेट फोर्स बिकम जीरो एंड टॉर्क इज ऑल्सो जीरो. इधर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है. This is perpendicular distance between line of action. So we say if line of action is same, net torque is also zero. If line of action of two forces is same, torque is zero. Otherwise, अगर line of action different है तो torque X. If line of action is different, torque X on the molecule. और torque का रोल क्या होगा? Torque tries to bring it to the equilibrium position. अब दो equilibrium position पड़ी थी, stable and unstable. We said dipoles align themselves in the direction of stable equilibrium position where P and E are parallel. And torque align them. Torque aligns the molecules in direction of electric field. Direction of electric field means P and E are parallel. So it's a simple thing. हमने कहा कि अगर मीडियम के अंदर डाइपोल्स होंगे, मॉलिक्यूल बिहेविंग एज डाइपोल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे टॉर्क एक्ट करेगी एंड दैट अलाइन द डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. But what if there are non-polar molecules? Non-polar molecules like diatomic molecules. अगर हमारे पास non-polar molecules हैं, like O2, इस केस में होगा कि they don't have any dipole moment of their own. हम ऐसे शो कर देंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कोइंसाइड कर रही है. They don't have any natural dipole moment. And center of mass of positive and negative charge coincide. Positive and negative charge coincides. अब अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स है जहां पे सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा है, इनकी कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है, बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे कि मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था जिसमें सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा था और मैंने इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो we say that in this case पॉजिटिव पे फोर्स लगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव पे फोर्स एक्ट के इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड. Because of these equal and opposite forces, the molecule gets polarized. ये था नहीं polar molecule, but ये polarize हो गया कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया पॉजिटिव और नेगेटिव पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे एंड दिस मॉलिक्यूल गेट पोलराइज्ड. So when external field is applied, molecule gets polarized. And when we say that molecule gets polarized, it means
Now they have the dipole moment, which will be referred as induced dipole moment, because natural dipole moment nahi hai, but now they have the induced dipole moment. After applying external field, molecules which are polarized will have induced dipole moment. उनको बोल देंगे these are induced dipoles. आगे का प्रोसेस सेम है. पहले हमने कहा था कि अगर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो टॉर्क एक्ट करेगी एंड दे अलाइन देमसेल्फ. इस केस में नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, फर्स्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल पोलराइज द मॉलिक्यूल, दे स्टार्ट बिहेविंग एज इंड्यूस्ड डाइपोल्स. And once they start behaving as induced dipoles, again torque acts on them and align. So basically process ये है कि चाहे polar molecule हो चाहे non-polar molecule हो, when you apply external electric field, torque acts on the dipoles which align them in the direction of external electric field. अब इसका effect क्या होगा? When molecule gets aligned in the direction of external electric field. अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक लेता हूं, dielectric placed in external field, arbitrary shape कंसिडर कर सकते हो या कोई पर्टिकुलर शेप भी ले सकते हो. बट इफ आई टेक एन आर्बिट्रेरी फील्ड, मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है जिसको मैंने एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया एंड लेट इट बी हैविंग सम आर्बिट्रेरी शेप, और मैंने इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में. मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो इसके अंदर जो डाइपोल्स हैं, अगर तो वो पोलर हुए तो दे स्टार्ट अलाइनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अगर नॉन पोलर होंगे फर्स्ट दे गेट्स पोलराइज्ड एंड देन दे गेट्स अलाइन. तो बेसिकली अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल होनी शुरू हो जाएगी. देयर इज नो मोशन ऑफ फ्री चार्जेस. जैसे कंडक्टर्स में था कि इलेक्ट्रॉन मूव्स टू वन साइड लीविंग अदर साइड पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसमें सिर्फ अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स होगी, लाइक ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. सिमिलरली यहां पे भी सारे इसी फॉर्म में alignment of dipoles takes place. So इसका effect अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? You will have a layer of negative charge on one side and layer of positive charge on the other. कि एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बन गई, एक साइड नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन गई. Now due to these induced layers, इसके induced layers का effect क्या होगा? हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, इन चार्जेस का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. अगर मैं यहाँ टेस्ट चार्ज रखूं, forget about this field, ये पॉजिटिव चार्जेस की जो इधर लेयर बनी है और जो नेगेटिव की लेयर है, इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अप्लाइड के ऑपोजिट होगा. सो वी से दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो होगा, वी कॉल इट नेट, इट इज वेक्टर सम ऑफ अप्लाइड फील्ड प्लस इंड्यूस्ड फील्ड, अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे. बट अदरवाइज अगर हम लिखें कैन से मैग्नीट्यूड लिखोगे तो नेट फील्ड इज अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड. कंडक्टर्स में था कि चार्जेस कीप्स ऑन मूविंग till induced and applied electric field balance each other, and net electric field inside a conductor is zero. इसमें ऐसा नहीं होगा.
the charges will not move in because there is no free movement of charges. ऐसा नहीं इसमें electrons हैं जो एक तरफ जा रहे हैं, इसमें dipoles हैं. With every positive charge and negative charge is attached. So you cannot have all electrons moving to one side. तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो हो जाएगा कि अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E है, the induced electric field will be E minus EI, but it will not be zero. ये होगा किसके इक्वल? E by K, or you can say E by epsilon R. बिकॉज हमने पढ़ा था कि मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है. सो दिस इज द रीजन कि अगर मीडियम पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, मीडियम के डाइपोल्स अलाइन करेंगे एंड नेट फील्ड को, जो नेट फील्ड होगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड इंड्यूस्ड फील्ड. मेटल्स में EI इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अप्लाइड एंड इंड्यूस्ड फील्ड. सो दिस बिकम जीरो, मतलब epsilon r becomes infinite. So हमें जो पॉइंट याद रखना है कि whenever dielectric is placed, in external field, electric field intensity inside dielectric is less than applied electric field intensity, but it will not be zero. तो अब इसको यूज करेंगे अगर हम कैपेसिटर प्लेट्स लें, कि कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक लें. ये यहां तक क्लियर है कि हमने कहा कि अगर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टॉर्क एक करेगी डाइपोल्स पे, वो अलाइन हो जाएंगे, डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे, तो जो इंड्यूस्ड लेयर ऑफ चार्जेस बनेगी, इट जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड. And the direction of induced electric field will be opposite to the direction of applied field. So net field is the difference of two. अगर हम कैपेसिटर लें, with dielectric between plates, first I consider a normal air capacitor. मेरे पास एक कैपेसिटर है, upper plate let it be positive, having charge plus Q. Lower plate having charge minus Q. There exists an electric field between these two plates. Positives and negative external electric. This is the field of the plates. This exists. And this field is constant. Uniform बनाया, field line straight, parallel and equidistant. अगर distance between the plates हम लेते हैं D, so we can say potential difference between the plates is ED. So we say consider air capacitor. Consider air capacitor.
distance between plates d and charge on plates plus q and minus q. Standard assumption we will assume कि size of plates is very large as compared to the distance between plates. अगर मैं capacitance लिखूं तो C is equals to Q by V because field is uniform. Electric field intensity uniform है, so we can say V is equals to ED. We can substitute this value. So you can say C is equals to Q by V. Q by ED. अब अगर मैं डायलेक्ट्रिक फिल करता हूं इस कैपेसिटर में, मैंने कुछ रीजन में डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया, कैपेसिटर प्लेट्स में अगर हम डिस्टेंस d ले रहे हैं, let the thickness of dielectric be p. अब नॉर्मली होगा कि अगर हम फील्ड को कंसिडर करें, there is a field in the region with there is air between the plates, कि यहाँ पे एयर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, because dielectric is placed in this external field and dielectric will have its own induced electric field which is opposite to the applied field. So we say net field inside the dielectric is reduced. Direction तो यही रहेगी, बस इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है थोड़ा सा वीक हो जाएगा, तो हम फील्ड लाइंस में डिस्टेंस बढ़ा देंगे. एयर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लेते हैं इट्स ई, इस रीजन में, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी ई माइनस ई आई. चार्ज ऑन द प्लेट सभी सेम है, अपर प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू एंड लोअर प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू. So if we insert a dielectric of thickness T, electric field inside dielectric is अब हमारे पास दो रीजन हो गए. टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर था d, उसमें से t रीजन में डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया. इतने रीजन में डायलेक्ट्रिक है तो बाकी रीजन बचा d माइनस टी, तो d माइनस टी में एयर है और डिस्टेंस t में इट्स डायलेक्ट्रिक. तो अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, we can say it's potential difference across dielectric plus पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एयर. दो रीजन हो गए, डी माइनस टी में एयर है और टी रीजन में डायलेक्ट्रिक है. डायलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई माइनस ई आई, पोटेंशियल डिफरेंस इज ई माइनस ई आई इंटू टी. एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एयर की थिकनेस है डी माइनस टी, बिकॉज हम ले रहे हैं कि इसमें अब टी रीजन में डायलेक्ट्रिक है और डी माइनस टी में इट्स एयर. So this is the new potential difference. Charge on the plates of capacitor नहीं है,
सेम रहेगा, जो चेंज नहीं हुआ, तो वी कैन से न्यू कैपेसिटेंस इज Q by V dash. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन थी C इज इक्वल्स टू Q by V। अगर मैं सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, C dash Q, बिकॉज न्यूमरेटर तो सेम है, C dash by C is V by V dash. V is ED, V dash is न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो D से, तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे CD E minus EI by T. Also, you know, दो रिलेशन C is equals to epsilon naught A by D, E by epsilon naught. Conveyed in this E minus EI. You can say ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 by epsilon naught, C की वैल्यू पुट कर देंगे, so you get C dash is this is the capacitance of parallel plate capacitor if you have some dielectric field, partially filled. पूरे में फिल कर दे तो वी हैव नोन दैट अगर पूरे में डायलेक्ट्रिक फिल कर देंगे तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर बढ़ जाएगी। लाइक अगर यहाँ पे हम लें पूरे में फिल कर दिया अगर, तो सी डैश का ये फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज विद मीडियम इट्स जो वैक्यूम या में थी। अगर मेटल फिल करते इलेक्ट्रिक की जगह, if metal is filled between plates, इसको अगर इन्फिनिटी पुट कर दें तो C dash is equals to epsilon naught A upon D minus D. So अगर मेटल फिल करेंगे then it's epsilon naught A upon D minus D. इसको देखना कि हमने क्या किया, अगर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, हाउ दे विल बी अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर अगर डाइलेक्ट्रिक को मीडियम में प्लेस किया तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, और उसका इफेक्ट अगर हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट्स में डाल दें तो क्या होगा।